भारत के पश्चिमी छोर पर बसा हुआ एक राज्य गुजरात और वहां का ये शहर गोधरा। वर्ष 2002 में गुजरात में दंगे होते हैं, जिनमें सबसे भयावह तस्वीरें इसी गोधरा से आती हैं। आज गोधरा वापस चर्चा में है। 2002 के इन दंगों के बाद गुजरात के गोधरा में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त को गुजरात सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया है। पूरी घटना समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 2002 में। दंगों की आग 3 मार्च 2002 को एक पीड़िता बिल्किस बानो के परिवार तक पहुंचती है। बिल्किस के परिवार पर हथियार, तलवार और अन्य हथियारों से लैस 20 से 30 लोगों ने हमला बोला। दंगाइयों ने बिल्किस, उनकी मां और परिवार की 3 अन्य महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। हमले में परिवार के 17 में से 7 सदस्यों की मौत हो गई, 6 लापता हो गए। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। ये लोग इसी निर्णय के परिणाम स्वरूप जेल में थे। गुजरात सरकार द्वारा इन्हें छोड़ने का जो फैसला लिया गया, उस पर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल सामने आया है वो ये कि सरकार इस निर्णय तक कैसे पहुंची। और जवाब ये है कि सरकार ने इन 11 लोगों को छोड़ने के लिए 11 लोगों के एक पैनल का गठन किया। लोगों ने आरोप लगाए कि गुजरात की वर्तमान भाजपा सरकार ने पैनल अपनी सहूलियत के अनुसार चुना था। आइए देखते हैं कि इस पैनल में कौन लोग थे और कौन है वो 11 सदस्य जिन्होंने इन 11 अपराधियों को आजाद कर दिया है। पहला, सुजल मायात्रा, जो कि पंचमहल के डीएम हैं और इस 11 सदस्यीय पैनल के हेड थे। दूसरा, सीके राहुल जी, जो कि बीजेपी से गोधरा के एमएलए हैं। इन्होंने मोजो स्टोरी से बात करते हुए ये तक कह दिया कि आरोपी ब्राह्मण समाज से आते थे, इसलिए वो संस्कारी हैं और इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशनली भी हो सकता है ना कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। सुमनबेन चौहान, जो कि बीजेपी के लिए एमएलए हैं कलोल से। पवन सोनी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी, ये भी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सरदार सिंह पटेल, जो कि बीजेपी यूनिट गोधरा तालुक के हेड हैं, ये भी बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। विनीता बेन लेले, ये भी गोधरा बीजेपी विमेंस यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये भी लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। मुरली मूलचंदानी, इन्हें पैनल में सोशल वर्कर बनाकर जोड़ा गया था, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पूर्व में बीजेपी की ओर से गोधरा म्यूनिसिपल काउंसलर रह चुके हैं। स्नेहल बेन भाटिया, ये भी बीजेपी की महिला विंग की सदस्य हैं। हिमांशु सोलंकी, एसपी गोधरा। महेंद्र रथावा, सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य थे। एक सदस्य डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर था और दूसरा सेशन कोर्ट का एक जज। कुल मिलाकर निर्णय ये निकलकर सामने आता है कि इस पैनल के आधे से ज्यादा सदस्य सत्तारूढ़ दल बीजेपी से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और इसलिए क्या इस पैनल की निष्पक्षता पर यकीन किया जा सकता है या नहीं। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमने उन जजों से बात की जिन्होंने इस केस पर वास्तव में निर्णय लिया था। After delivering the judgment, as a judge, we cease to be functus officio. However, it is for the state to consider the sentence at an appropriate time and then consider the issue of the remission. In the present case, it appears that people, the persons who are concerned with the felicitation of the accused persons, they are interested in something else, and this is not good for the health of the society also. Because once the accused have been held guilty throughout, the Supreme Court, the Apex Court also held them guilty. Now that judgment is final.
the evidence which was brought forth and the opportunity was given to the accused to scan the evidence, to scrutinize it, to challenge it, all after that, they have been held guilty. Therefore, this particular exercise of felicitation is in a very bad taste. It in fact revolts against the constitutional apparatus of judiciary. Therefore, my view is it's not correct. They should have kept away from this. Remission is the issue to be considered by the state, and the state has to consider all the aspects which are connected with the crime. And the times when the remission is being given is also important. Now they say that 1992 policy was adhered to and not 2014. In my view, 2014 is the policy which has been designed after time-gathered wisdom came to be dawned on the government. Therefore, that should be, in fact, would have been appropriate to have been applied. If not applied, to be considered, and then the remission issue could have been resolved. What I am saying, it's a legal gimmick, I would say. Make an application to the Supreme Court, persuade them saying that the petitions are pending, you resolve that and get the direction that you decide that particular application or petition by 1992 or whatever it is. अब तक हमने जस्टिस यूडी साल्वे को सुना, जिन्होंने वर्ष 2008 में इन अपराधियों को पहली बार जेल भेजने का काम किया था। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। अब हम बात करते हैं उन जजों के पैनल में से एक जस्टिस दीपक गुप्ता से, जिन्होंने ये निर्णय दिया था। Strictly speaking, the remission may be legal. It may not be illegal, but it is highly unjust. It is unfair. It is also immoral in a certain sense. Why I am saying this is that I've been told that there is a 92 policy, the older policy, because every convict is governed by the policy at the time of the offence, and in that policy there's no bar to a rapist being given remission like now. Having said that, we are dealing with a case which was a gang rape by 11 persons. It was a gang rape of a pregnant woman. It was a gang rape coupled with the murder of a small child. In these circumstances, even if the old remission policy is to be applied, you have to look at the gravity of the offence. Remission, you see, life doesn't mean 14 years or 16 years or 18 years. Life means life. And it's only that remissions can be granted after 14 years. But in a case like this, I would have thought they would have waited another 5-6 years at least before remission could be even thought of. But, the saddest part is the justification being given for the release. Are we living in a society which is now going to decide whether people are going to be granted remission on the basis of the religion they belong to, on the basis of the caste they belong to? I thought we lived in a society where religion and caste play no role, and especially not in criminal law. पूर्व जजों के अलावा बहुत से ऐसे वकील भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का विरोध किया है। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम जो हमारे सामने आता है वो है सीनियर एडवोकेट और एक्टिविस्ट वृंदा ग्रोवर का। The law says that the chapter from section 432 onwards deals with remission. It is an important part of any penal system where the state should have the power to allow release, and here also they've been released after 14 years. We must put that on record. Under section 435, if a case has been investigated by the CBI, this particular case was investigated by the CBI. Section 435 of the Code of Criminal Procedure deals specifically with cases investigated by the CBI, and it says that the power of remission that is awarded to the state government
in a case investigated by the CBI shall not be exercised by the state government except after consultation with the central government. So when I say state here, I mean the state of Gujarat, the government of Gujarat, as well as the central government. This decision could not have been taken and to reward them with remission except with the mandatory consultation with the central government and therefore the Ministry of Home Affairs. The Ministry of Home Affairs has put out these guidelines. Even in the new circulars issued for release of prisoners on 15th August 2022 as well as 15th August 2023, the Ministry of Home Affairs is very categorical that rape convicts will not get the benefit of this policy. Let us also then look at the law. What does the law say? There is a judgment. These accused men had gone to the Supreme Court. The Supreme Court had said, and this is a law for long, that the policy that will apply will be the policy that was in place at the time of conviction. This conviction for the first time takes place in Bombay, where, if you recall, the trial had to be transferred as there was no hope of a fair trial in the state of Gujarat. The Supreme Court transferred the trial. The Bombay Sessions Court convicted these men in 2008. The policy of remission, which is the state of Gujarat policy, applicable on them, is a policy which dates back to 1992. To the best of my knowledge, that policy is nowhere available in the public domain today. And perhaps the state of Gujarat would be kind enough as a state to inform us as citizens by putting up that 1992 policy under which this remission has been granted. So let me just make this a little clearer. There is a 1992 policy which is not in the public domain, at least not to my knowledge. It may be with others, which would govern the remission. I don't know what is written in it. Most remission policies, I have had the occasion to appear in a matter relating to Rajasthan, exclude heinous crimes, grave crimes. This particular incident is what would, in international criminal law, be described as crimes against humanity when this kind of targeting and killing and gang rape takes place. So any policy would actually exclude heinous crimes of this nature. Because it is CBI investigated, the state government, which is the state of Gujarat, which would apply the 1992 policy, cannot take this decision exclusively by itself. The Code of Criminal Procedure, which is the ordinary law of the land and whose writ will run, compels them to take this decision after consultation with the central government. Of course, they also have to take the opinion of the sitting judge who convicted, etc. None of those documents are before us. We don't know how this decision was arrived at, but the law is very clear and there's no confusion. Therefore, this is not something that the center can say, I have no role to play. We don't know what the state of Gujarat does. State of Gujarat has taken this and you can't shirk. You have approved, affirmed this decision. Your consultation was mandatory. And therefore, for the center to then say that they have no role to play in this would be contrary to the law. हमारे इस आदर्श भारतीय समाज में एक ऐसी घटना और हुई थी जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था, निर्भया केस। हमने इस विषय पर निर्भया की मां आशा देवी से भी बात की कि वो बिल्किस बानो के केस के बारे में क्या राय रखती हैं और जो गुजरात सरकार ने अपराधियों को छोड़ने का फैसला लिया है, इस पर उनके क्या विचार हैं। अगर ये ब्राह्मण थे, संस्कार अच्छे थे, तो फिर इन्होंने रेप क्यों किया, फिर बलात्कार क्यों किया, फिर इतने दिल जेल में क्यों गए? या कहीं हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि आप रेप करो, बलात्कार करो, अगर पंडित हो या संस्कारी हो तो आपको छोड़ दिया जाए? इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। जिस तरह से उनको स्वागत किया गया, मैं उसका भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती। उन्होंने कितने मर्डर किए, एक छोटी बच्ची को मार दिया, प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप बलात्कार किया, तो इनको तो फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा हमने पीड़िता बिल्किस बानो के पति याकूब रसूल से बात की, जिनका ये कहना है कि उन्होंने अभी तो अपना जीवन जीना शुरू किया था और अचानक से वापस से उन पर ये गाज गिर गई।
पूरी तरह हम लोग डरे हुए, क्योंकि हमारा जो परिवार खोया है उसको रोज याद करते थे। उसको रोज याद करने के बाद हम उनके लिए दुआ करते थे। हमारी 3 साल की जो बेटी मार डाली उसके भी लिए हम दुआएं करते थे। तो हम उन परिवार को जो खोया था उसको रोज याद करते थे और नई एक जिंदगी जीने की शुरुआत कर रहे थे। और उसमें आज ये अचानक से 11 आरोपी को गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, तो एक अचानक से हमारे दिल के अंदर इतनी बड़ी चोट पहुंच गई है कि अब आपको क्या बता सकते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ सत्ता में आई एक सरकार की राज में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या के अपराधियों को आज़ाद कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल हम पर और आप पर है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.